Mumbai ground, Victor Tango Oscar Mike Golf, Stand Echo 6, pre-flight radio check, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. How do you read? Victor Tango, Oscar Mike Golf, Mumbai ground. Read you 5. How do you read? Read U5, Frank 5, Victor Tango Oscar Mike Golf. Hmm. Very, very good afternoon, Om and Manan. I would like to see you all. Please set up your camera quick. Manan, how do you read? फटाफट setup करो Manan. Waiting for you. Okay, Om, what's the update on the feedback I've given you yesterday? Yes, sir. I didn't, I haven't done anything after that. So I thought after this mock, I'll make the notes about the information RTR मतलब कैसे आंसर देने उसका फुल डिस्क्रिप्शन में वो सब मैं लिखूंगा उसके बाद उसकी तैयारी करूंगा अभी तो मैं पार्ट 1 की कर रहा था ओम, इंस्ट्रक्शंस क्या दिए आपको? अगर आप वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करोगे तो वो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा? और तुमने बताया नहीं मुझे। अब मैं चाहता था कि आप आज सुबह रेडी रहो सारी सिस्टम की फ्रीक्वेंसीज के साथ। समझो, कम से कम मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा था। अब तुम बोल सकते हो सर आपने मुझे पीडीएफ नहीं भेजा इसलिए नहीं किया, बट इरिस्पेक्टिव मटेरियल तो ऑलरेडी है। एटलीस्ट उतना तो करते, मेमोरी वाली चीज है। बाकी ऑल यू हैव टू डू वाज व्हाट? टेल योर माइंड अ फ्यू थिंग्स, जस्ट गो थ्रू द ऑब्जर्वेशन। तो उतना करना है, बस करके छोड़ देना। मैंने बोला आप कुछ एक्सपेक्ट मत करो, आप बस इतना करो एंड आप बस एक्सपेक्ट करो कि इट विल बी गुड फॉर यू। ये एक चीज, एक रीजन होता है, सिंपल है, तुम्हारे केस में नहीं होगा। इन जनरल आई एम शेयरिंग अबाउट स्टूडेंट्स। if you don't follow instructions given to you, you will not get the results that the instructor has, you know, is hopeful for that you will get. एंड इस वजह से हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते कई बार। हम मेहनत तो कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। सो ऑलवेज रूल, पहले जितना बताओ उतना करो, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा करो, और नहीं कर रहे हो तो बताओ। सो आई एम सरप्राइज्ड, 2 घंटे एक्स्ट्रा मिले तुम्हें, उसमें तो कर लेते कम से कम। है ना, कोई बात नहीं। पहली चीज ही, क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए, बट यू हैव टू हैंडल दिस बिकॉज इनिशियल नर्वसनेस से ही हमारा स्टेबिलिटी इन परफॉर्मेंस गिर जाता है। सो आई डोंट वांट यू टू शो मी एनी चेंजेस इन योर परफॉर्मेंस इवन आफ्टर गेटिंग अ स्कोल्डिंग फ्रॉम मी। समझ गया? मन में बोलने का ओके, आई गेट इट एंड आई हैव टू डू इट, आई विल डू इट एट द अर्लीस्ट, ये हो जाना चाहिए बस। टाइम है मेरे पास, 10 मिनट का रिविजन ही तो करना है, और आधा घंटे के पॉइंटर्स बनाने होंगे तुम्हें, ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज के लिए। समझ रहे हो? एक न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करने बोला था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग आप बोलोगे सर मेरे को मुश्किल हो रहा है बिना कैलकुलेटर के करने के लिए, आप मुझे थोड़ा स्किल्स बताओ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग ऑल दैट, बट ठीक है। नहीं भी क्या तो मुझे लगता है वो ऑब्जर्वेशन में ही तुम्हें सारी चीजें याद आ गई होंगी बिकॉज यू हैव स्टडीड इट। सो आई एम ऑन योर साइड एंड आई एम बीइंग पॉजिटिव अबाउट इट, डोंट वरी। ओके, सॉरी फॉर माई एवेटार स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा मेस चल रहा हूँ स्केड्यूलिंग, बट आई एम हैप्पी आई कुड मेक इट ऑन टाइम। आई एम नॉट वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट आई एम वेयरिंग एंड वेयर आई एम। आई होप यू ऑल डोंट माइंड। मनन, टॉक टू मी प्लीज। अरसा बीत गया है, तुमसे बात नहीं हुई है। कैसे हो, क्या चल रहा है, रिवीजन हुआ तुम्हारा? आई रीड यू 0।
कोई बोलेगा जीरो भी होता है रीडेबिलिटी स्केल में? ओम होता है क्या जीरो? नेगेटिव सर। ओम अनम्यूट पे रहो, प्राइवेट सेशन है तुम्हारा। मनन तो बस, मनन के लिए तो ट्रायल है, टू मेक हिम गेट यूज टू अटेंडिंग द सेशन। मनन वैसे तुम्हारी भी एग्जाम 10 दिनों में ही आ रही है ना? ज्यादा टाइम बचा नहीं है। मनन म्यूट पे हो तुम, मैं आस्ट यू अनम्यूट दबा रहा हूँ, अब ट्राई करो। हम्म। जीरो जीरो, चल। जूम पे ऑप्शन है, म्यूट का बटन होता है ना माइक का, वहां पे ऑप्शन होता है टेस्ट स्पीकर एंड माइक्रोफोन। जल्दी करो, ट्राई करो फटाफट। ओके ओम, बताओ कुछ डाउट्स है तो, पार्ट वन पार्ट टू, एनीथिंग। विल क्लियर योर डाउट्स, विल टॉक अबाउट दैट एंड देन विल क्विकली डू द मॉक। नेगेटिव सर, आई एम रेडी फॉर मॉक। कभी भी हाँ या ना बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि हाँ बोलना है ना बोलना है। सोच के आंसर दो, भले आंसर सेम हो तुम्हारा। मनन, डिड यू फिक्स इट? मनन, कैन यू हियर मी? मनन, माइक्रोफोन टेस्ट करो और फिक्स करो जल्दी, शायद परमिशन देनी होगी तुम्हें जूम को माइक्रोफोन यूज करने के लिए। कुछ भी हो सके, करो ना जल्दी, फिगर आउट प्लीज। 2 मिनट का काम है। ओके, सो ओम, लेट मी गाइड यू विद सम प्री फ्लाइट ब्रीफिंग। मनन, तुम्हें भी याद रखना एग्जाम के लिए। मनन, इफ यू कैन नॉट स्पीक, एटलीस्ट क्विकली एक्नॉलेज विद इमोजीज एंड टेक्स्ट ऑन जूम। यू नो द ड्रिल राइट? याद करो पहले कैसे अटेंड करते थे लाइव सेशन। इज द सेम ड्रिल। So, what is this exam paper all about, Om? The exam paper is all about a flight that you are conducting from point A to point B. What kind of flight it could be? You get that information in the iCAO flight plan under type of flight. Now, can you and Manan, either of you tell me what is the item number on the iCAO flight plan for type of flight? आइटम नंबर 8। Give me more description, Om. Flight plan, they can ask you number of items, बॉक्सेस, कितनी फील्ड्स हैं, कितने आइटम में कितने ऑप्शंस होते हैं। आर यू थरो विद इट? कल तुम्हारे वाइवा में वो नहीं पूछा था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए। आई एम नॉट श्योर इफ 8 इज करेक्ट, प्लीज गिव मी अ बेटर करेक्ट आंसर। मनन, सेम क्वेश्चन, आइटम फॉर टाइप ऑफ फ्लाइट। क्विकली ओम, चेक करो फ्लाइट प्लान का कॉपी, सीधा गूगल ड्राइव से डाउनलोड करो अपने लाइब्रेरी से। और कुछ नहीं तो एम्प्टी फ्लाइट प्लान भी देख लोगे, समझ जाएगा सही है गलत है। और सही है गलत है कैसे बोलना है सर? सही है 8 पे ये 3 चीजें होती है, 2 चीजें होती है, उसके बाद 9 पे ये 2 चीजें होती हैं ऐसे, या 7 पे ये चीज होती है, आगे पीछे का भी समझा देने का, सो दैट Yes, पीपल। sir. It's item number 8, the flight rules and type of flight. फ्लाइट रूल्स एंड टाइप ऑफ फ्लाइट, नाउ दैट्स द करेक्ट आंसर। Yes. समझे? सिर्फ टाइप ऑफ फ्लाइट 8 पे बोल दोगे, इंसान मानेगा ही नहीं आंसर, अगर उसको नहीं मानना तो, बिकॉज 8 पे और एक चीज आप मिस कर रहे हो। तो बोलेगा मतलब तू कुछ तो गलत बोल रहा है, उसको समझ आ जाएगा। दिस इज एविएशन लॉजिक, समझ रहे हो आप? तो पूरा इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी आप पढ़ रहे हो फंडामेंटल्स के साथ होलसम होना चाहिए, इट शुड बी कंप्लीट, दैट्स इट। सो नाउ बी क्विकली गो थ्रू द फ्लाइट प्लान, एक बार देख लो, सब आता ही नहीं आता है, कुछ भी कभी भी पूछा जा सकता। बी कॉन्फिडेंट, हाँ आता है मुझे, बस नहीं आता तो बोलोगे। लास्ट में सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन भी देख लो। सो क्विकली, सो क्विकली आई टेल यू what is this exam question paper all about. I'm giving you a briefing, a pre-flight briefing.
Now, this pre-flight briefing is generally given to you before every flight. Remember, we have done briefings, description of 3 briefings: med briefing, ATC briefing, and communications briefing, right? You remember? Someone? Yes, no, maybe? Simple. So, what is that briefing? The briefing is where the briefing officer will guide you about the flight plan, give you the flight plan, ask you to read it, ask any questions. If you're confused about the route, the viewers, all the information that is there in the flight plan, along with any NOTAM issued or any other publication issued, right? And then when you are satisfied that no, I don't have any questions, then we go and successfully take the flight. Now, talking about unfortunate incidents, all the times that a passenger aircraft has met with an accident, there was briefing. 95% of the aircrafts, or maybe 99% of the aircrafts are safe. Maybe just 1% is meeting with an accident. Maybe lesser than, I think it's very less. The ratio is very less. But everybody was following the same process. The briefings, everything, checks. Sometimes wrong briefings were the reason. Sometimes pilot error was the reason. Sometimes maintenance was the reason. Sometimes weather was the reason. Sometimes unlawful interference was the reason, right? It still happens. The reason we brief, the reason we do is so that those things don't happen. It is an important aspect of a safe conduct of a flight, that is briefing. When I think about briefing and I think about RTR A exam, okay, what do I brief you about? Now, my pre-flight briefing in life is all about my flight plan. Manan, this is the abbreviation for flight plan, ICAO approved. In RTR exam, it is also about flight plan. But that is not just the only thing. There are other techniques. Firstly, you master the flight plan and look for 13 or maybe sometimes 14 points, or we call them elements, or in ICAO language, we call them items. Are we 1000% sure about these elements of the exam flight plan? Yes. Good. No, then we have some work to do here. Now, when it comes to RTR exam briefing, you get handed the question paper. So the question paper has flight plan. Okay. So you study the flight plan. Studying the flight plan will mean check your call sign, check your departure arrival, track it on the chart, check other information, check flight rules, check alternate, check type of aircraft, check time of departure, check flight level, check wake turbulence, check equipment, right? Check everything. Track on your chart. Now imagine you're going to fly from this point to this point. Okay, I've understood the flight plan. Great. Now what happens in a pilot's life? Obtain ATC information, obtain pushback, obtain startup. Before that, carry out radio checks, then taxi, comply with taxi, then line up, then enter runway, then take off request, then ATC clearance compliance. Before that, take ATC clearance, then climb to a certain point, and then do your en route straight flying route by route, generally done over autopilot, and continue with your reports, FIR reports, position reports, air reports, pilot reports, air reports, and what do we say? Wind shear report if that happens, air prox if that happens, anything other that happens. And then at a certain point you will reach, you will request for, you'll plan your descent, you'll say top of descent, you'll descend, then you'll plan your arrival and then follow the arrival procedures. It could be ILS, it could be visual approach, right? Those are the only things. Now, why is your exam so difficult? Why, if in my real life, my success rate is more than 99%, but why in my RT exam, the success rate is only 15%? Why? It is no different than real life. It is just that maybe we are not aware what we are supposed to do and we think it's a question and answer thing. So you study the flight plan and then you will get certain questions. Now these questions, this can be planned because you have studied a lot. These 4 are unplanned.
Now, something that is unplanned, you cannot mug up or by heart that. Okay. But the problem is, we think there's a question, so there'll be a fixed answer, and that's how we approach RT exams. When you will be doing your flight training, when you will be doing your simulator checks, they will give you the same things. The people taking your exam will give you the flight plan, will give you the briefings. They'll put you in the cockpit at one point in the flight. It could be departure, starting from all the things that I've said, or maybe they'll put you somewhere mid-flight. In exams, also the same thing can happen in RT. The first calls could be pushback startup calls or taxi calls, or maybe directly lined up calls also sometimes. So you cannot just mug up things. Now, what happens in the sim check that you will be doing the final check before your job will meet each other? All of a sudden, you will experience engine malfunctions. All of a sudden, you will feel pressurization failure. Your examiners would have programmed that in your simulator software. So they might have 1,000 such programs to simulate. So 1,000 plus possibilities of distress situations, urgency situations, security situations, and all the other emergency situations. And they will see how you perform in that. In that performance, you have to land the aircraft safely. That is your first requirement. Second, you will be communicating during the sim check also with ATC. RT exam is so much more easier. You just have to communicate. Sir, I got an disconnection for some time. Hmm. Network issue. So in sim check, they will give you any situation, all of a sudden, any situation from distress, urgency, security, or any other safety related situation. The program of this simulator check would, the simulator would, would have preset problems that can be given to a pilot taking that exam. 1,000 combination of problems. A pilot doesn't know what can happen. They will try to give him or her a problem that they have never encountered before to see how they handle the aircraft. For them, landing the aircraft is first priority, to land it safely. Second is to be able to communicate also at the same time. Your RT exams are similar, but they're much more easier because you don't have to control the plane or the simulator also. Nobody's going to check whether you're going to land safely on the sim or not. Nobody's going to rate you on the performances. So your multitasking is limited to only communication and thinking what you will do with respect to decisions. You don't have to think about a checklist of 1,000 pointers or 100 pointers or 50 pointers during every emergency, which otherwise you'll be trained. So if in the sim check, they'll tell you your left engine is not responding in some of the other way or jargon, what will happen there? You will have to first go through checklist of, okay, there's a quick QRH, okay, that couple of names to such checklists. You'll check, okay, left engine failure, what to do. Then as per the checklist, you'll try all troubleshooting. If nothing works, then they'll tell you what to do. If nothing works, then they'll tell you what to do. And then you talk to ATC based upon what was the outcome, and then decide whether you'll proceed or do emergency landing or do force landing. In exams, you are directly required to take that decision. In RT exams, it is very easy. So don't worry about these questions at all because it is all going to be unplanned. You focus on what you have studied. See the situation. Radio check. If they say do radio check, you have to do everything. You have to do radio check, landing and parking the aircraft also. But in the exam, they'll give you around 3 to 4 to 5 situations only. Couple of them would be, one can be RCF, one can be weather, one can be RVSM, one can be distress, one can be urgency. 2 or 3 taxi ground related, 1 or 2 arrival related. That's it. They try to give you a wholesome experience. So don't mug up answers, but understand the technique you have learned in RT. That's it. So when we come to briefing, check the flight plan. If you're satisfied with the flight plan, you don't even have to go through all the questions. Even if you do, it's okay. In sim checks, you don't get the liberty to know what are the emergencies that you're going to get. You cannot prepare. You just get it and you do it. So why not follow the same approach in RT exam?
So that's the real test. The day you are ready, you will clear the exam and get the license. It's all about you being trained. That's it. So be very careful. You start with a radio check. Keep talking to the ATC examiner until they say go to the next question. When they say go to the next question, then you see the next question and you see during taxi, fire on board. Simple. Okay. Now you realize I'm somewhere during taxi, maybe in between my parking bay and the lineup or the runway. Nothing else might be given. Then what call will you make? It's fire. It's Mayday. You frame it in your mind. This is very important. Okay, it's Mayday. It's distress. What is distress? Distress requires a code. Mayday set preferably 3 times. Okay, what is the call structure of distress? Addressing, condition, intention, other information. Okay, I know it. Let's study everything. From where to where am I going? What's the aircraft? Where is this problem happening? And luckily, I'll be given question number 3. And question number 3 would be maybe 150 DME outbound. Nothing but a position report. So you realize that fire wala problem has been resolved. That is benefit. Even if you don't see this, it's fine. So taxi, okay. I know I have to take this call. Now I take this call. मैं आपको समझा रहा हूं तब भी मुझे 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लग रहा है. When you will think of it in your mind, it will take you hardly 5 seconds. Now, this is the main briefing, not just the flight plan, not just the understanding of how to answer, also the understanding of how to answer particular question. रेडियो चेक आपने बाय हार्ट करके रखा होगा. आपको पता है सिर्फ एटीसी देखना है. टैक्सी फायर ऑन बोर्ड तो हमने कभी करा ही नहीं है. वी हैव नेवर डन दैट. वी डू फायर ओनली व्हेन वी आर इन एयर. सो इट विल बी अ न्यू थिंग. So you take your time because all calls will be new for you because it's unplanned. So this is the most important part of this briefing for your RT exam, that study how to give the call before you give the call in your mind. This is one reason why you all fail in part 1 or fail to clear part 1. That's it. Even after studying literally. If you follow this process, you will definitely get 15 extra marks. And that 15 extra marks overall could be a deciding factor between you clearing and not clearing part 1. अमानंद तुम पार्ट 1 में अच्छे हो, तुम्हारा हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है तुम ये सब सुनोगे नहीं. समझ रहे हो ना? प्रैक्टिस छूट गई है, सब छूट गया है, या फिर तुम पेपर रट चुके हो, शायद वो रटा हुआ पेपर ना आए, कुछ भी हो सकता है. समझ रहे हो? हमें दोनों पे ध्यान देना. And then when the call is framed in your mind, then you go ahead with the call. Before that, just check the ATC. Finally, check the question again if you're made correctly. And quickly frame in your mind. I'm framing in my mind. I'm just speaking so that you can hear. Mayday, mayday, mayday. If I'm in Delhi ground, because it's taxi. Okay, my call sign. Let me make sure I understand the call sign. If it's a flight name or maybe it's just Victor Tango. Okay, if it's Victor Tango Alpha Lima Kilo. Okay, good. Fine. Fire, mayday, I'm fine. What will I do? Intent, I would hold position. I'll initiate fire extinguishing procedures and would request firefighting services and instructions to disembark passengers also. इतना टाइम मैंने ये क्वेश्चन को स्टडी करने के दिया है कि इंटेंट बिल्डअप हो रहा है मेरे माइंड में अपने आप. नहीं तो मैं सिर्फ फायर फाइटिंग सर्विसेज मांग के छोड़ दूंगा ना. मैं फायर एक्सटिंग्विशिंग प्रोसीजर स्टार्ट किया वो बोलूंगा ना. मैं पैसेंजर को इवैक्यूएट करने के इंस्ट्रक्शंस मांगूंगा. बट क्योंकि आई हैव फॉलोड द स्ट्रैटेजी दैट आई एम गिविंग यू एज अ पार्ट ऑफ ब्रीफिंग, आई गेट द आइडिया मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ. what are those things that I can do at max as a pilot to ensure safety. Evacuating passengers is on higher priority than getting firefighting services in such a case. If I have to compare a microsecond level of what will come, what should be more priority, both are more important. How do you initiate fire extinguishing procedures? जो भी systems होंगे एयरक्राफ्ट में प्लस हैंड फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं. नाउ आई एम रेडी टू टेक द कॉल. मैं सिखाते सिखाते भी 2-3 मिनट में कर रहा हूं. आप लोग दिमाग में करोगे 30 सेकेंड्स में पूरा हो जाएगा. And then you take the call and your rate of speech should be confident because now you have researched and worked and now you're going to give the call. What happens if you don't do all this and just directly take the call? Your call will have a lot of mistakes and examiner will not like it. If you do this, call will have no mistakes. Simple.
So my agenda is that your call should be perfect, and this is the best way to reach about doing your calls. The sooner you get it and the sooner you apply it, the more you get to practice and the more you'll be able to get the benefit out of it. Now I'll make the call. Okay. Now I recall my writing and speaking skill also, and I start writing, and whatever I write, I speak. So it's a comfortable rate of speech. If I speak and write, and if I'm nervous and anxious, then my rate of speech would be fast. My writing would be scribbled. I will miss out on writing something. Examiner will be like, how will I write if you're speaking so fast? They will reply fast. You will miss their reply, and first or second question, one of the questions is gone. Even that can happen at this level, even after you have done so much. So we be careful. If we are feeling nervous and all, we have the techniques. We take deep breath and we center ourselves. Okay, I'm the commander of this flight and I cannot be nervous. Simple. I'm the only person who cannot be nervous. I'm not a student. I'm not a struggler. I'm not someone who's not good with Hindi. I'm not someone who's not cleared RT so many times. I'm not someone who is not having the guts or the confidence that it will take for a commander to handle the situation. Because आज नहीं तो कल आप सब लोग वो करने वाले हो, नहीं तो हम लोग प्लेन में कैसे बैठेंगे? That's it. And then you start the call. Now see, Mayday, 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 Delhi ground, Victor Tango, Alpha Lima Kilo, fire on board aircraft, initiating fire extinguishing procedures, request immediate instructions to disembark passengers and firefighting services on taxiway Charlie. Aircraft holding position taxiway Charlie, Boeing 737, passenger on board 120, IFR Delhi to Mumbai. Kindly expedite. Now this kindly expedite, if you don't use it's fine. You can say kindly expedite. Expedite is a word. This is how a call is to be made in the exam. You don't even need a flight plan to understand this example because you understand everything. You know, for this call, I just need departure, arrival, maybe one taxiway, which can be assumed, nothing else. All this info I'll say I've got from the flight plan. Passenger on board will not be mentioned in your exam flight plan. Now just look at this call. While writing also, if I was making any mistakes before speaking, I could correct it. Now that is the other advantage of first writing and then speaking. Now the call sounds so good. Maybe if I study and correct it, I can find 2 or 3 mistakes in this call also. But this is enough to pass with flying colors. That's all that it takes, and it's effortless. I tell you, it's one of the easiest exams in the world. People just don't understand it. And what people don't understand, they fear. And what they fear will always overpower them. That's it. And this is spiritual truth going on since the creation of intellect, I would say. इंसान है जब से ये सब है. क्या पता animals and apes also were doing that. God knows. I always believe I'm a descendant of apes. तो शायद करते ही होंगे. अब तो मेरे जोक पे हंस नहीं रहे हो ना, मतलब तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो. समझ रहे हो ना? जोक अच्छा है तो मुझ पे हंसोगे, जोक बुरा है, सॉरी, जोक अच्छा है तो जोक पे हंसोगे, जोक बुरा है तो मुझ पे हंसोगे, बट हंसोगे तो सही ना. हाँ मनन,
कोई कोई तुम्हें 500 रुपए दे के कोई रैली में नहीं बुलाया पॉलिटिशियन के कि बस बैठो 3 घंटा बैठ के जाना है? हाँ। सो डिड यू गेट इट? रिपीट दिस फॉर एवरी Affirm. क्वेश्चन एंड यू आर गुड टू गो. एनी क्वेश्चंस? Negative. Victor Tango Oscar Mike Wolf. नेगेटिव बोलने से पहले 5 सेकंड रुके हो. छोटी छोटी चीजें फॉलो करो चुपचाप. छोड़ूंगा नहीं क्लास में से तुम्हें, नहीं तो मैं हूँ. मनन, क्या नारियल वाले कुछ पूजा वूजा करूँ तुम्हारी? मन वीवीआईपी हो गया है मनन ना. बहुत. आई लाइक इट, आई डोंट माइंड इट. चलो. एनी क्वेश्चंस ओम? Negative, sir. Victor Tango Oscar Mike Wolf. आई लाइक दैट. इंटेलिजेंट लगता है. लड़का इंटेलिजेंट लगता है. मनन, एनी क्वेश्चंस? डिड यू अंडरस्टैंड द ब्रीफिंग? आपको भी 5 मिनट लेके ही बोलना है. ओम, सारी चीजें याद है मॉक लेने से पहले? Affirm, sir. Victor Tango Oscar Mike Wolf. अफर्म बोलने से पहले भी 5 मिनट सोचना है. 5 सेकंड याद रखो. क्यों सोचना है? क्वेश्चन पे आप सोचोगे. हाँ सर ने क्या पूछा, ब्रीफिंग सब सब याद है, पेपर के पहले क्या करना है, तो तुम 5 सेकंड में खुद को याद दिलाओ सब याद है कि नहीं है. कुछ अगर आ गया नहीं है तो पूछ सकते हो, नहीं आया तो ठीक है. सीधा ओवर कॉन्फिडेंटली हाँ बोल देंगे और दिमाग में कुछ रह गया है तो मिस्टेक रह जाएगी हमारे पास. उफ, चलो. आई विल शेयर द क्वेश्चन पेपर. विल टाइम इट फॉर 5 minutes, दैट इज 25 minutes, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. मिस्टेक्स हो रही हैं, खराब हो रहा है, जो भी है उसके ऊपर काम करके अच्छे से एग्जाम देने जाएंगे. ठीक है. इन केस बहुत खराब जा रहा है तुम्हारा मॉक, टेंशन मत लेना. इन केस बहुत अच्छा जा रहा है, थोड़ा उड़ना, ज्यादा मत उड़ना. सिंपल. ठीक है. मनन, कुछ किया क्या माइक का? चलो. ओम, गो ब्लाइंड. Imagine you are in the exam waiting hall and waiting to be called out. I'll send you an email and I'll also share the question paper on screen. I'll not be sharing my logs. Om, would you want me to keep my video on or keep it video off to simulate realistic? Just tell me that. Sir, keep off. Keep it off. Okay, so we all will be off. Only question paper will be on. Fine. And the moment you are done, nicely comfortably click pictures and reply to the question paper email, or you can firstly send it over WhatsApp and then send it as an email, but I will need it. So remember that your logs. Don't do Affirm. any negative added corrections. जैसा है वैसा ही भेजना. Affirm. Okay. चलो. I can call you in 2 minutes, 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes, whatever it is. I'm going to simulate something psychological. So be there. Okay, and be there to talk to me. मनन, अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो तुरंत मैसेज आना चाहिए तुम्हारी तरफ से. मनन, क्योंकि ओम कर रहा है मॉक, तुम सिर्फ ऑब्जर्व करोगे. मनन, तुम्हारा माइक्रोफोन अगर तुमने कनेक्ट, कॉर्ड में कुछ एरर होगा, कुछ और लगा लेते. या फिर माइक तुम्हारे लैपटॉप का यूज कर लो और हेडफोन्स हेडफोन्स का यूज कर लो. ऑप्शन आएगा तुम्हें चूज स्पीकर एंड माइक्रोफोन का. कम से कम लैपटॉप वाले माइक या कंप्यूटर वाले माइक या फोन वाले माइक से तो दो चीजें सुन पाऊंगा मैं. ठीक है. एक बार ट्राई कर लो, हो रहा है तो ठीक है. एक बार सेशन छोड़ के वापस ज्वाइन करने का ट्राई करो. लास्ट चीज. तब तक मैं पेपर भेज रहा हूँ आप लोगों को.
All the best, and let's do it, Om.
Okay. Om, imagine your roll number or name is being called. Please come to the exam center. It means you have to check your email and quickly let me know. I'm also sharing the paper on screen. The moment you say you've got it, I'll start the timer. In the exam, they'll start the timer the moment they give you the paper. They'll say start transmitting. Make sure you follow the process. Don't rush into starting. Affirm. Victor Tango Oscar Mike Golf. Om, share your observations and answers. I'll need you to send me a log on WhatsApp. Not Om, sorry, Manan. You have to also write your answers. Also look at any mistakes made. In the end, you'll just send me a write up of your notes. Received email. Question paper. Okay. Hmm. And your timer starts now. You can start transmitting. Meeting question number 1 alpha. Kolkata ground. Victor Tango Romeo Golf Zulu. Stand Mike 8 Boeing 737 IFR Kolkata to Port Blair via Alpha 465 Papa 628. Reflight radio check 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. How do you read? Victor Tango, Romeo Golf Zulu, Kolkata ground. Read U5. How do you read? Read you 5 Frank 5 Victor Tango Romeo Golf Zulu. Roger, Kolkata ground. Kolkata radio Victor Tango Romeo Golf Zulu. Mike 7 correction Mike 8 Boeing 737 pre-flight cell call check on secondary check cell call Alpha Bravo Foxtrot Lima. Victor Tango, Romeo Golf Zulu,
Kolkata radio. Speak slower. Say again all after check cell call. Speak slower. Wilco, I say again. Check cell call. Alpha Bravo Foxtrot Lima. Victor Tango Romeo Golf Zulu. Checking cell call. Alpha Bravo Lima Foxtrot. Kolkata radio. Negative. I say again. Check cell call. Alpha Bravo Foxtrot Lima. Victor Tango Romeo Golf Zulu. Go to next question. Transmitting question number 1 Bravo. Kolkata ground. Victor Tango Romeo Golf Zulu. On taxiway Charlie. See a personnel near starboard wing being hit by a fire truck. Aircraft Boeing 737 on taxiway Charlie for runway 18. Disregard. Pan 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 pan. Kolkata ground. Victor Tango Romeo Golf Zulu on taxiway Charlie. See a person near starboard wing being hit by a fire truck. Aircraft Boeing 737 on taxiway Charlie for runway 18. Request further instruction and emergency medical services on standby. Victor Tango Romeo Golf Zulu. Kolkata ground. Roger Pan Pan. Report intention. Kolkata ground.
Victor Tango Romeo Golf Zulu. Request firefighting services. Correction. Request emergency medical services. Boeing 737 on taxiway Charlie for runway 18. Go to next question. Transmitting question number 2. Chennai Radio. Victor Tango Romeo Golf Zulu. Departure report. Victor Tango Romeo Golf Zulu departed Kolkata at 1355, passing 2500 IFR, Kolkata to Port Blair, estimating Alpha 1415, Falco 1430, Ismon 1450, Larik 1500, Vatila 1520, ETA Port Blair 1545, estimating Kolkata Chan correction, estimating Kolkata Chennai FIR boundary 1500, Victor Tango Romeo Golf Zulu. Go to next question. Transmitting question number 3. Kolkata
control, Victor Tango, Romeo Golf, Zulu, over, small, receive, bad weather, warning, over, Larry, request, rerouting, clearance, would like to join Papa 628 at Watila, Boeing 737, IFR, Kolkata to Port Blair, flight level 350, Kolkata, control, Victor Tango, Romeo Golf, Zulu, Bhubaneswar, approach, Victor Tango, Romeo Golf, Zulu, Go to next question. transmitting question number 4, Pan Pan, Pan Pan, Pan Pan, Chennai, control, Victor Tango, Romeo Golf, Zulu, 90 DME, inbound, Port Blair, experiencing slowly cabin decompression, request immediate descent to flight level 100, Boeing 737, IFR, Kolkata to Port Blair, flight level 350, hospital flight, Victor Tango, Romeo Golf Zulu, Chennai Control, Roger Pan Pan. Once clear of reciprocal traffic below you at flight level 340, clear to descend to flight level 100, maintain radial, report reaching.
Once clear of reciprocal traffic below us at flight level 340, cleared to descend flight level 100, will maintain radial Wilco Victor Tango Romeo Golf Zulu. Go to next question. Transmitting question number 5. 1. If emergency, sir, do I have to say only true or false or should I read the question? True or false? You can say direct true or false. Roger. For question number 5, 1, false. Go to next question. Question number 5, second, true. Next. Question number 5, third, true. Next. Question number 5, 4, false. Next. Question number 5, 5, an instrument, You can just answer the blanks. Roger. Initial, intermediate, and final. Okay. You can submit your paper. Roger. Come on, students. Can I see you? Manan, Om. Are you done? भेज दिया मेरे मुझे अपने पेपर.
मनन पीडीएफ में भेजो, अच्छा रहेगा। बस चल जाएगा, चलेगा, अभी पिक्चर्स भेज दो, चल जाएगा एक बार। वो में इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर अपलोडिंग अपलोडिंग। मैं बोला अगर नहीं हो रहा है तो आप तुरंत मुझे बस फोटोज भेज सकते हो, वो बाद में कर लेना। ठीक है। मैं डायरेक्टली फोटो भेज रहा हूँ हम्म। अभी। हो गया? अब कितना टाइम ले रहे हो? अब आ रही हैं अरे, पिक्चर्स? हम्म। ठीक है। गुड। चलो बताओ, मनन आई कैन नॉट सी यू। ओम टेल मी हाउ इज योर एक्सपीरियंस? experience was good, but I think the second या third question, let me open the question paper. First question, Bravo. I think I got confused. So what would be my intention? So I just call the emergency medical services. Everything was good from my point of view. हम्म। व्हाट डू यू फील, पास हो जाओगे Uh, ये मॉक में? Inform. Affirm, sir. हम्म। पेपर समझ में आया, फ्लाइट प्लान समझ में आया? Or one thing, it was a special handling hospital flight, हम्म। but I read it first time, but after doing cell call check, I forgot, and I got to remember it in the last question, I guess, fourth question. So I mentioned it here. सॉरी, रीड यू टू से अगेन। I forgot about the hospital flight, हम्म। special handling, हम्म। and I remember it when I was doing fourth question. So I just mentioned this in fourth question. हम्म। व्हाई डू यू थिंक मिस हो गया आपसे? Because uh, I was focusing on cell call at that time. Means I read this. मैंने वो पढ़ा भी था, लेकिन uh, जब मैं सेल कॉल कर रहा था तब मैं भूल गया और बाकी क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस हो गया। ओके। हम्म। एनीथिंग एल्स, ऑब्जर्वेशंस? नेगेटिव अगला टैंगो माइक बोल। आई एम रियली प्राउड यू आर अप्लाइंग थिंकिंग एंड सेइंग नेगेटिव। मैं सोचा कि जवाब क्यों नहीं दे रहा, इसको आवाज नहीं आ रही क्या? मैं खुद भूल गया था। मैंने सोच के नेगेटिव बोला, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आई होप सोच के कर रहे हो। सोचना के लिए ही वो पॉज दिया जाता है जनरली, है ना? और कोई रीजन नहीं हो पॉज देने का। ओके मनन, व्हाट वाज योर टेक अवे फ्रॉम दिस? मनन फटाफट व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजो, मैं सुन लूंगा।
सो मनन, आपने भी स्पेशल हैंडलिंग एसटीएस नहीं देखा हॉस्पिटल फ्लाइट, एंड आप सेल चेक भूल गए प्री फ्लाइट चेक में। गुड। छोटी मोटी चीजें तुम्हें भी रिवीजन करना है ताकि ये चीजें ना भूलो। ये जेन्युइन चीजें हैं जो हम बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेड मिस्टेक्स, मोस्ट फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स दैट वी हैव टू अवॉइड। ठीक है, चलेगा। ओके, so Om, are you ready for your feedback? I'll simply give you a feedback to show you where you were wrong. Make whatever you can make out of it so that you don't make any mistake if it is there in this. Otherwise जो अच्छा है उस पे अच्छा रखो। ठीक है, are you ready? Oh, Your logs are good. No problem with your logs. Very clean. Good job there. Mm, let me see if you have written no response when ATC was not responding. affirm, sir. ENR, ENR, short, नहीं, in पूरा short. लिखो, पूरा लिखो, no Okay. response. Okay, don't write Sure, an sir. Sure. unless। एंड ये VOMA क्या है? ये कौन सा रेडियो है? उसके कॉल साइन क्या लिखा है आपने? क्वेश्चन नंबर 2। वो मैंने गलती से आपने बताया था कि एफआईआर के जो व्हाट से फॉक्सट्रॉट लिखते हैं लास्ट में भी नहीं नहीं, वो वैसा नहीं यूज करना है क्या? नहीं, वैसा नहीं है। यहाँ पे आप लोकेशन इंडिकेटर ही यूज करोगे। गॉट आपके इट। पास जो लोकेशन इंडिकेटर्स का मैंने राइट अप दिया है उसमें FIR के 4 डेजिग्नेटर्स हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। वो तुम्हारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए है। गॉट यहाँ इट। पे आप चेन्नई का चेन्नई रखोगे। वो वाइवा में कभी पूछ लिया, आप क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ लिया, तो तुम्हें यूज करना है वहां पर। है ना? याद तो रख सकते हो। आई एम नॉट श्योर करेक्ट है कि रॉन्ग है, चेक कर सकते हो आप। बट यहाँ पे आप लोकेशन इंडिकेटर ही यूज करो। रेडियो है तो रेडियो, VOMM चेन्नई के लिए। है ना? ये तो गलत हो जाएगा। क्या पता ओह, एग्जामिनर को नहीं पता। समझ रहे हो? तो तुम्हें खाली फोकट, खाली फोकट, फोकट इज बेसिकली फ्री, खाली इज एम्प्टी इन मराठी। यू नो राइट मराठी? फोकट, राइट? आई एम सेइंग राइट, राइट? हाँ, affirm. खाली फोकट। ओके, सो द वर्ड इज लाइक एम्प्टी एंड फ्री। ओके, एम्प्टी एंड फ्री। तो क्या ही हो गई वो चीज? एम्प्टी है तो फ्री कैसे हो गई? इट्स लाइक बेसिकली इट्स अ लॉस दैट वी डिडंट हैव टू टेक। ऐसा हो जाता है लाइक। ओके, आज कुछ नया सीखा मैंने। ओके, गुड। सो प्लीज बी केयरफुल। नो रिस्पॉन्स के बारे में बाकी तो ठीक लग रहा है मुझे। सीधी फोटो भेज देते यार। ठीक है, पेन थोड़ा डार्क यूज करो एग्जाम में। Affirm, sir. क्वेश्चन नंबर 1, रेट ऑफ स्पीच थोड़ी फास्ट लग रही थी जब मैंने स्पीक स्लोअर बोला। उसके बाद से आपने रेट ऑफ स्पीच को स्लो किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड जॉब देयर। बहुत अच्छा कॉल था। बस रेट ऑफ स्पीच थोड़ी फास्ट थी। ठीक है, मैंने टू फास्ट लिखा है यहाँ पे। अदरवाइज इट्स गुड। यू गेट अ गुड स्कोर, 8 out of 10। एवरीथिंग वाज गुड। W1, W2, where you are, what are you doing, why have you called, W3, W4, everything was good. Phrase was used, scale was set, everything is perfect. जस्ट बिकॉज रेट ऑफ स्पीच ज्यादा थी और थोड़े मार्क्स काटने का काम होता है एग्जामिनर का, वो काट रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बोला। आप समझ गए, आपने रेडियो को कॉल किया एंड आपने प्री फ्लाइट चेक बोला। वन थिंग आई वॉन्ट यू टू लर्न हियर इज हाउ टू यूज करेक्शन। whenever we say correction, we start with the last correct word. यहाँ पे आपने correction बोला। correction, so your call was Kolkata Radio Victor Tango Romeo Golf Zulu Mike 7 correction Mike 8। तो Mike 7 गलत था। correction बोल के आप गलत वर्ड को डायरेक्ट सही नहीं करोगे। लास्ट सही वर्ड क्या था आपका? ये था। तो ये कॉल ऐसे जाएगा, कोलकाता रेडियो विक्टर टैंगो रोमियो गोल्फ जुलू माइक 7 करेक्शन विक्टर टैंगो रोमियो गोल्फ जुलू Mike 8। Did you understand this? Oh, Students, this is very important. Whenever you say correction, you start with the last correct word and then say the corrected word. ये बहुत, there are a few rules, only a few rules in RT which we have to follow.
बस. बट द गुड थिंग इज इन द नेक्स्ट करेक्शन दैट यू डिड, यू फॉलोड द करेक्ट पाथ. क्वेश्चन में एक और बार आया, वहां पे आपने सही किया है, तो 50-50 है. आधा आपको ध्यान में है, आधा ध्यान में नहीं है, ऐसे बोल सकता हूँ. समवेयर इट्स किकिंग इन, समवेयर इट्स नॉट किकिंग इन. बाकी अच्छा लगा. टू फास्ट अगेन. ये तो एग्जामिनर अच्छे थे क्योंकि तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा था. कई एग्जामिनर्स को बुरा लग जाए या ना समझ जाए, वो करे ही ना कुछ. यू नेवर नो. पीपल आर पीपल, राइट. दे हैव देयर ओन वे ऑफ असेसिंग योर परफॉर्मेंस. तो मैं नहीं लिख पाया आगे का. क्योंकि मैं नहीं लिख पाया, I said speak slower, say again all after check cell call. Learn from this students in case examiner is a little fast and you cannot write. जहां तक लिख सके लिखे आप. भले आपकी गलती से आपने नहीं लिखा है, आप तुरंत ये स्ट्रैटेजी यूज करके उनसे say again बुलवा सकते हो. Remember that. This is one thing where even if you make mistakes, you can rectify it by using this. See, W1, W2, and just one phrase. Second phrase, say again all, कब से? After check cell call. Simple. No grammar, nothing. Just phrases and call signs. This is how your article should be. I liked how you tried to give uh, readback of everything said, speak slower, will को. I liked it. Good touch. I really appreciate it. आप अपने हिसाब से words and phrases को use कर रहे हो. नहीं तो जनरली लोग I say again से start करते हैं. And I liked it what you did. Keep it up. I say again, check cell call, Alpha Bravo. Very good. I purposely gave you a wrong call sign, wrong cell call, and you got it correctly, and everything was checked perfectly. अगर तुम इतनी परफेक्शन नहीं करते तो मैं और चेक करता कॉल कैसे कर रहे हो, क्योंकि आपने परफेक्ट कर लिया, मुझे पता है चल इस चीज में पास हो गया, उसको दूसरा टेस्ट देते हैं, इस चीज में पास हो गया, उसको दूसरा टेस्ट देते हैं. सो द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग राइट थिंग इन द फर्स्ट कॉल, इन द फर्स्ट गो, आफ्टर फॉलोइंग द स्ट्रैटेजी इज दैट द आपको टेस्ट कम दिया जाएगा, ज्यादा दिया जाएगा तो पेपर जल्दी खत्म हो जाता है. ऐसे होता. सो गुड जॉब देयर. Speak slower, will co, I say again, checking cell call negative, very good. By the time you finished question number one, alpha, 5.5 minute चले जा चुके थे. But you didn't panic at all, and this is really what I appreciate. You don't worry about the time. Generally, इस point पे question number one bravo and question number two पर आप पहुंचे हो, बच्चों को लगता है बहुत time चले गया and they panic. But you didn't panic, and the result was you were in surplus of 3.5 minutes. Imagine. अब तुमने इतना नहीं सीखा होता तो क्या होता, वहां पैनिक करके 2 मिस्टेक्स और हो जाती. समझ रहे हो आप? सो आई रियली अप्रिशिएट दिस ओम, कीप इट अप. गुड जॉब. एक बार तुम्हारे दिमाग में आ गया स्पीक स्लोअर चल रहा था, एंड दैट वाज रियली गुड. अच्छा था, उससे सब कामनेस एंग्जाइटी कोई ऐसे लग रहा था कि बहुत अच्छे से ले रहे हो तुम सोच समझ के. मिस्टेक्स हुई है छोटी मोटी, वो तो रेक्टिफाई हो जाएंगी. तो टोटल आपको इस पे 8 दे रहा हूँ, +1 बोनस मिल सकता है, कॉल अच्छा था आपका. ठीक है. तो ओवरऑल आपको क्वेश्चन नंबर वन लेंदी है, बट मैक्स यू कैन स्कोर इज 9 out of 10 on question number one alpha. Question number one bravo. You missed saying pan pan. You made a mistake which I have been warning to not make. सोच समझ के कॉल लेना है. कितना सिंपल था pan pan. किसी और को चोट लगी, the definition of urgency, a situation or a condition affecting the safety of the aircraft or its passengers or a person or vehicle in sight that does not require an immediate assistance. This person is in sight. It follows under urgency. Pan pan. कितना टाइम जाता? हाँ. Why do you think this mistake happened? But the good thing is you said disregard, you realized and you started. ये चीज 2 मिनट पहले कर लेते, मन में डिसरिगार्ड कर हो जाता ना. इफ यू फॉलो द प्रोसेस, मेक अ कॉल इन योर माइंड एंड देन टेक द कॉल, तो ये रॉन्ग कॉल आता नहीं तुम्हारा. सेकेंडली, डिसरिगार्ड कैसे करना है, किसको डिसरिगार्ड बोल रहे हो उसको अच्छे से कॉल करो. कितने बारे मैंने सिखाया, डिसरिगार्ड बोल रहे हो, व्हाट इज द प्रोसेस? W1, W2, डिसरिगार्ड. डिसरिगार्ड माई लास्ट ट्रांसमिशन होता है, डिसरिगार्ड माई करंट ट्रांसमिशन नहीं होता. डिसरिगार्ड का मतलब, सो इफ यू डोंट से द कॉल साइंस एंड जस्ट से डिसरिगार्ड, इसी को डिसरिगार्ड बोल रहे हो. दे माइट जज यू ऑन दिस थिंग, यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस. कुछ ही तो रूल्स है आरटी में. व्हेन यू से डिसरिगार्ड, W1, W2 एंड देन से डिसरिगार्ड, बस. बट आई लाइक इट व्हाट यू सेड एंड यू स्टार्टेड विद पैन पैन. कॉल तुम्हारा, तुम स्ट्रगल कर रहे थे इसमें, बट तुमने अच्छा किया. यू वर टुवर्ड्स द बेटर साइड. इंटेंट मतलब तुम क्या प्लान कर रहे हो, तुम टैक्सी कर रहे हो या तुम होल्ड कर रहे हो, बस वो पता करना था. तुम तो उसकी हेल्प के लिए मांग रहे हो, वो लोग देख लेंगे, वो लोग संभाल लेंगे. तुम्हारा इंटेंट क्या है?
तुम बोल रहे हो मेरा इंटेंट है फायर फाइटिंग सर्विस बुलाने का, मेडिकल सर्विस बुलाने का, वो तो मेरे को दिख गया ना। तुमने बोल दिया पहले कॉल में, तो दोबारा ऑब्वियस क्वेश्चन क्यों पूछूंगा मैं? तो तुम्हें क्लिक होना चाहिए था। तुम्हारा क्या था? विल होल्ड पोजिशन अंटिल द पर्सनल इज टेकन केयर ऑफ, इज अटेंडेड बाय द मेडिकल। बाय मैंने इसका एग्जांपल अच्छे से दिया था, वो तुम्हारे विंग टिप के पास है और तुम्हारी एयरक्राफ्ट लाइव वहां चल रही है। द प्रॉक्सिमिटी इज टू हाई, समझ रहे हो? उसको और डैमेज हो सकता है तुम्हारी वजह से, इसलिए। समझ रहे हो आप? affirm, Holding position, request further instructions was supposed to be added here in this case. If not, you would say would like to continue to taxi due hospital flight on priority. आई बात समझ? क्योंकि वो स्पेशल हैंडलिंग कहीं तो आएगा ना पेपर में। अब उसको टाइम जाएगा उनको देखने के लिए, आप तुरंत किसी को भेजो, मेरे पास हॉस्पिटल फ्लाइट है, मुझे तुरंत जाना है, मुझे तुरंत टेक ऑफ लेना है। तो यहाँ पे इंटेंट वुड बी टू कंटिन्यू टू टैक्सी एक्सपेडिशियस टैक्सी ड्यू हॉस्पिटल फ्लाइट। दोनों चीज क्लिक हो सकती थी। इंटेंट क्या है समझो, तुम क्या कर रहे हो प्लेन के साथ, दैट इज द इंटेंट। तुम दूसरे के लिए मंगा रहे हो, दैट इज नॉट द इंटेंट। है ना? ध्यान रखना है इस चीज का, बहुत थिन लाइन है ये, कुछ अलग है। एक्सपांड द होराइजन ऑफ योर माइंड हियर अ लिटिल मोर। आपने इतना किया है, ये सब धीरे धीरे ऐड करोगे आप, एक दिन परफेक्शन पे पहुंच जाओगे। अब कहाँ हो आप? परफेक्शन के टूवर्ड्स हो। एवरी डे आर क्लोजर टू परफेक्शन। मैं तो बोलता हूँ वो परफेक्शन कभी आनी नहीं चाहिए, यू जस्ट कीप गेट इम्प्रूविंग इम्प्रूविंग। समझ रहे हो? हमें लगता है ये परफेक्शन है, हम यहाँ रुक गए, कल को ये रिक्वायरमेंट आ गई, हम मैच नहीं कर पाएंगे। बट व्हेन आई से परफेक्शन, इफ यू आर ऑन दिस, ये रिक्वायरमेंट है तो भी आप एक दिन ऊपर चले जाओगे, ये रिक्वायरमेंट है तो ऑलरेडी आप ऊपर जाने की तरफ रहोगे, ये रिक्वायरमेंट है तो यहाँ चलते रहोगे, और ये रिक्वायरमेंट है तो आप ऑलरेडी कितने ऊपर हो, सुपर से ऊपर बोलते हैं ना, वैसा। सो गुड जॉब। ठीक था, बाकी कुछ इश्यू नहीं था। रिपोर्ट इंटेंशन, ये अच्छा तो लगा। मेरे को लगा ये कहीं ना कहीं बोल देगा ऑन टैक्सी वे चार्ली फॉर रनवे 38, तो आई अज्यूम्ड यू आर कंटिन्यूइंग विद द टैक्सी यहाँ पे, सो ठीक था। कहीं ना कहीं अगर मैं स्टूडेंट के फेवर में सोचता हूँ बिकॉज ही और शी इज डूइंग गुड, देन आई कैन ट्राई टू मेक सेंस समवेयर। क्योंकि तुमने बहुत कम मिस्टेक्स किए हैं, इसलिए तुम्हें ये बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। सो ओवरऑल यू first didn't say pan pan, but you said disregard and then said pan pan because it's a pan pan call. You followed the structure: addressing, condition, intent, sorry, intent, and some additional info you gave. Very good. So I can easily give you 16 on 20 and maybe plus one additional. अगर ज्यादा होगा तो इतना होगा, इससे कम नहीं होगा। कम अगर होगा तो -1 होगा। मुझे नहीं लगता इससे कम होना चाहिए बिकॉज यू फॉलो द प्रोसेस। सो गुड जॉब ऑन दैट। जस्ट रिमेंबर इंटेंट एंड हॉस्पिटल फ्लाइट को अभी भी थोड़ा लिंक कर सकते हो, क्योंकि हॉस्पिटल फ्लाइट पहले आपने पढ़ा ही नहीं था, शायद वो इंटेंट क्लिक भी नहीं हुआ होगा। है ना? नया सिचुएशन है, एक ही बार क्लास में हमने पढ़ा था। इट्स समथिंग आई थिंक यू मिस द लाइव सेशन, आई थिंक मे बी दैट डे यू वर नॉट देयर और मे बी यू वर देयर, आई एम नॉट श्योर। बट हमने रिसेंटली लाइव क्लास में एग्जाम्पल किया था। समझ रहे हो अब तक क्या बोल रहा हूँ मैं? affirm. Victor Tango for my goal. So actually this is a 10 mark question, right? So you will get here with 1 second. 5 marks. Yeah. 8 out of 10, okay? And maybe +1. So good job. Question number 2. Departure report was excellent. दो चीज मिस हुई हैं मुझे, रेडियल प्रेजेंट रेडियल नहीं मिला है। एंड आई थिंक आपको अभी नहीं याद दिलाऊं तो आप भूलने वाले हो, क्योंकि एग्जाम में कुछ कॉल्स आएंगे जहाँ रेडियल रेडियल हर कॉल में जा सकता है। तो अभी भी आप पासिंग 2500 क्या यूनिट नहीं बताया मुझे, एंड कौन से लेवल के लिए वो नहीं बताया। पासिंग 2500 फीट फॉर फ्लाइट लेवल 607080, कुछ भी बोल दो ना, या फॉर फ्लाइट लेवल 350 भी बोल सकते हो। लेवल चेंज में प्रेजेंट पासिंग लेवल और प्रेजेंट लीविंग लेवल एंड दी डेस्टिन्ड और टारगेटेड लेवल दोनों होना चाहिए। वो रूल है ना? वो एक स्लाइड मिस्टेक थी बस। और रेडियल मुझे नहीं मिला इसमें, और आगे भी तुम देखोगे तुमने रेडियल नहीं बोला है। सो वो एक वीक पॉइंट हो सकता है एग्जाम में। मेक श्योर यू स्पीक रेडियल एज लॉन्ग एज द मोमेंट यू आर इन एयर, यू विल बी ऑन अ रेडियल। आरएमआई तुम्हारा दिखाएगा ही दिखाएगा कुछ ना कुछ रेडियल, वो रेडियल बोल सकते हो आप। 360 में से जस्ट वो स्टेशन से आप कौन से मैग्नेटिक ट्रैक पर निकल रहे हो, वो रेडियल हो जाता है आपका। आपने वापस से एंड किया अपने कॉल साइन के साथ, जरूरत नहीं थी, ठीक है?
बट क्योंकि कॉल लेंदी था, इट मेड सेंस, सो यू गेट पॉइंट्स फॉर दैट। समझ रहे हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला चीज है। कोई गलत था चीज नहीं है, कोई बोलेगा गलत था, तुमने सेफ्टी के लिए किया है और ये गलत हो नहीं सकता है, ऐसी बात हो जाए, टेक्निकली वाले 2 मार्क काट दें, बट ये गलत होगा ही नहीं। एफआईआर बाउंड्री और वटीला दोनों एक ही पॉइंट पे है, तो तुम वटीला 20 मिनट बाद पहुंचोगे और एफआईआर बाउंड्री पहले पहुंचोगे, क्या चल रहा है तुम्हारा, समझ नहीं आया, कोई वर्म होल है क्या वहां पे? हाँ, नहीं सर, वो लेंदी था तो मैं टाइम में कंफ्यूज हो गया था, तो मैंने सोचा कुछ भी बोल लेता हूँ उसमें से, वो दोनों आस तो पास लग रहे थे तो इतनी इसलिए। मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, तो थोड़ी सी और कर लेना। ऐसा है बस, इतना अच्छा कॉल, इतना सोचा, इतने मजे से तुमने करा, मैं बोला यार कुछ तो एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तुमने एक्स्ट्रा किया। एफआईआर बाउंड्री बट एस्टिमेट वाटी लाइन बाउंड्री तो सेम है, तुम कौन सी बाउंड्री पे जा रहे हो, तो इसका मतलब मे बी यू हैव गॉट वन थिंग रॉन्ग, तो एज एन एटीसी आई एम वरिड। अरे भैया तेरे को क्या लगता है एफआईआर बाउंड्री कहाँ है? 20 मिनट पहले वटीला की कौन सी बाउंड्री देख रहा है, कौन सा चार्ट देख रहा है, कौन सी कंट्री में फ्लाई कर रहे हो तुम? पुराना चार्ट तो नहीं देख रहे भाई, बचाओ उसको, कोई समझाओ, क्रैश वैश ना हो जाए। इतना सब हो सकता है तुम्हारे एक मिस कम्युनिकेशन से। समझ रहे हो? तुम 1500 पे कौन सी बाउंड्री पे पहुंच रहे हो, क्या हो गया? क्या खा पी के आए हो प्लेन के पहले? ऐसा ऐसा सब टेंशन हो जाता है, सो बी केयरफुल। यहाँ पे सब हाइपोथेटिकल है, तो यहाँ मार्क्स कट नहीं होंगे, बट यू नेवर नो एग्जामिनर का क्या मूड है, बस। बट यू ट्राई टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, एंड वहां टाइम मिसमैच हो गई, सो आई गिव यू क्रेडिट फॉर दैट एक्स्ट्रा। अब आगे से ध्यान रखो, एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो ट्राई करेंगे वो एब्सोल्युटली करेक्ट भी हो हमारा, बस। बट इट्स नॉट अ बिग एरर, बट आई एम जस्ट हैविंग फन विद दिस एरर, और कुछ नहीं। अब बुरा मत मानो आप। नेगेटिव सर। हम्म, अच्छा था। 16 इजीली, बिकॉज लेवल चेंज अच्छे से नहीं बोला और रेडियल नहीं बोला ना, मार्क्स ज्यादा कट रहे हैं तुम्हारे, बिकॉज ये चीजें एसेंशियल है। रेडियल, डीएमई, फ्लाइट लेवल, एस्टिमेट्स, रूट, ये कंपल्सरी है। एवरी कॉल विल हैव अ बैकबोन विच इज दिस, these 5 things: रेडियल, डीएमई, फ्लाइट लेवल, रूट, एस्टिमेट्स। ये 5 तो हर कॉल में होने ही चाहिए, एज लॉन्ग एज यू आर इन एयर। गुड परफॉर्मेंस, 2 एसेंशियल चीजें मिस करके भी तुम 80% ला रहे हो, मतलब तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आई एम सो हैप्पी। बहुत खुश हूं मैं आज तुम्हारे परफॉर्मेंस से। यहाँ तुम कंफ्यूज हो गए, चार्ट पे क्लियरली लिखा है कि भुवनेश्वर टीएमए से बात होगी अबाव फ्लाइट लेवल 250। अब तुमने एटीसी चेक किया होगा, भुवनेश्वर के पास तो अप्रोच है, तो तुमने किसको कॉल किया? कोलकाता को कॉल किया। कोलकाता ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो तुमने कोलकाता को रेस किया वापस, रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो तुमने अप्रोच को कॉल किया। अच्छा हो तुमने अप्रोच को कॉल किया, चार्ट पे कुछ और था नहीं, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है यहाँ पर। समझ रहे हो? बट ऐसे टाइम पे आपको चार्ट में क्या बताया जा रहा है, भुवनेश्वर से बात करोगे, तो आप भुवनेश्वर अप्रोच का सिर्फ रेस करो स्टेशन। तुम्हें क्या सिखाया मैंने? वेन एवर कंफ्यूज बिटवीन एटीसीज, जस्ट रेस द स्टेशन एंड सी इफ यू गेट अ रिस्पॉन्स। इफ यू डोंट गेट अ रिस्पॉन्स, रेस द नेक्स्ट स्टेशन और द नेक्स्ट स्टेशन। 3 ही है यहाँ पे, कोलकाता, भुवनेश्वर, चेन्नई। भुवनेश्वर के पास कंट्रोल नहीं है, मैं कंफ्यूज हूँ, तो टीएमए क्यों लिखा है चार्ट पे? हमें पता है हाइपोथेटिकल है, हो भी सकता है कंट्रोल, इस टाइम पे अप्रोच से भी बात कर सकते हैं। बट मैं अगर चार्ट अच्छे से देखता हूँ और मैं पता करता हूँ कि इस्मॉन पे तो ऑलरेडी हूँ। भुवनेश्वर के पास इतना छोटा सा एरिया है, जो भी आप ब्लैक लाइन ब्लू लाइन में देख रहे हो, तो मुझे आगे का वेदर डेविएशन चाहिए। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सिचुएशन? साइक्लोन, बैड वेदर वार्निंग दैट आई एम गेटिंग इज ओवर हियर, माय पोजीशन इज हियर। अब मुझे आगे का क्लियरेंस चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे डायरेक्ट जाना है ऐसा। ठीक है, तुमने थोड़ा लंबा रूट ले लिया डायरेक्ट का, तुम सीधा वटीला पे जा रहे थे। आई डोंट माइंड, यू प्रपोज्ड इट, आई कुड अप्रूव इट इफ इट सेफ फॉर यू। ठीक है, बट ये किससे लोगे क्लियरेंस यहाँ पे? अब तुम्हें क्या लग रहा है ये किसके अंडर आ रहा है? ध्यान से सोच के मुझे बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है किसके अंडर आएगा, कोलकाता, भुवनेश्वर या चेन्नई? कोलकाता। वाई कोलकाता? बिकॉज इट्स इन कोलकाता एफआईआर। हम्म, बिकॉज इट्स इन कोलकाता एफ आई आर, ओके, गुड जस्टिफिकेशन। हमेशा ध्यान रखो, अगर आप एक कंट्रोल से निकल रहे हो
तो मिड पॉइंट तक उस कंट्रोल से बात करोगे, अप्रॉक्स मिड पॉइंट होते ही नेक्स्ट कंट्रोल से बात करोगे। यहाँ पे आप यहाँ हो, देखा जाए तो ऑलमोस्ट मिड पॉइंट पे है। यू कैन वेरी वेल ट्राई टू कॉन्टैक्ट द नेक्स्ट कंट्रोल ऑल्सो, बिकॉज आगे जैसे जैसे आगे जाओगे आप, जैसे 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 आपने यहाँ जाने की बात की डायरेक्ट, सो यू सेड यू विल बी गोइंग डायरेक्ट हियर। सो चेन्नई कंट्रोल से क्लियरेंस लेना बेटर है यहाँ पर। समझ रहे हो, आगे वाले से बात करो, आप पीछे वाले से नहीं, उसका काम हो गया। एंड यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भुवनेश्वर से बात करनी है। ये तो चलो पुराने चार्ट्स हैं, मैं आपको नया चार्ट भी दिखा देता हूँ। बाय द वे मनन, ये ड्राइव तुम्हारे साथ शेयर किया है, यहाँ से सारे नोट्स देख लो आप, ठीक है। और तुम्हारे पास नहीं है इसका लिंक तो मुझे बताना, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कैसे एक्सेस करना है। हम्म। यहाँ पे क्या है, भुवनेश्वर टीएमए टर्मिनल मोमेंट एरिया, अपर लिमिट से फ्लाइट लेवल 250 है। तो तुमने सही किया भुवनेश्वर को ना कॉल करके, ठीक है। या फिर इसका यस ये सर, भी हो मैंने सकता है, फ्लाइट लेवल टू फाइव मैंने जीरो से लेके अपर लिमिट तक सिर्फ भुवनेश्वर कंट्रोल है। भुवनेश्वर टीएमए, दो चीजें हो सकती है। तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पर? मैंने तब भी कोलकाता को कॉल किया, क्योंकि मैंने वो देखा कि भुवनेश्वर सिर्फ फ्लाइट लेवल 250 तक ही है, और कोलकाता के वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अपर लिमिट 460 तक है। तो मुझे लगा भुवनेश्वर सिर्फ 250 तक ही है, और मैं फ्लाइट लेवल 350 पे हूँ, तो कोलकाता को ही कॉल करूँगा। Chennai would have been a better option. I would have loved to see you try to raise the station for Kolkata and Chennai and see who replies, and maybe Bhubaneswar. Simple. नो रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो ट्राई करोगे आप। अगर आप कॉन्फिडेंट थे कोलकाता है, नो रिस्पॉन्स आया, फिर भुवनेश्वर अप्रोच किया, देन इट्स फाइन। समझ रहे हो, तो यू वर कॉन्फिडेंट अबाउट कोलकाता, बट ट्राई टू सी कि मैं किसके ज्यादा पास हूं अब, और मेरा डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट क्या है। लॉजिकली आई थिंक स्टिल चेन्नई कुड हैव बीन गुड। वाई? बिकॉज हमें लिखा है यहाँ पे कि फ्लाइट्स टू कॉन्टैक्ट चेन्नई कंट्रोल, तो हमें पता है चेन्नई कंट्रोल बहुत दूर दूर की फ्लाइट्स देख सकता है। बट ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट तुम्हारे फेवर में आएगा, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट वॉट एटीसी टू टॉक टू, it's more about your language, your RT phrases and your RT skills. So that was good. इसलिए आपको गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, बिकॉज अदरवाइज आपका कॉल अच्छा था। अभी इन कॉल्स में क्या हो सकता है, दे कैन गिव यू क्लियरेंस एंड देन यू हैव टू कंप्लाई इन रियल टाइम, जस्ट लाइक यू कंप्लाई विद एटीसी क्लियरेंस। तो कॉल थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, थोड़ा और आरटी चेक हो सकता है उसमें। ओके, सो ऑलवेज बी रेडी फॉर दैट। इस्मॉन बोलने के बाद एंड रिसीव बैड वेदर वार्निंग के बीच में थोड़ा डेड एयर मुझे फील हुआ, but it was within limits and that was the only dead air, so I like it. आई वॉज थिंकिंग बैड वेदर बोलूँ या साइक्लोन बोलूँ। दोनों बोल सकते तो हो, बट इंटेंट में ध्यान रखो, रिक्वेस्ट रीराउटिंग क्लियरेंस टू अवॉइड बैड वेदर ओवर माय दैट प्लेस, ओवर लारिक। रीजन बताओ ना क्यों, ये लॉजिक हो गया। रीजन नहीं बताओगे तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, भाई क्यों जाना है तेरे को। ऑब्वियस है, मैं बोला साइक्लोन है, बट तुमने कॉल में स्पेसिफाई किया क्या? इंटेंट शुड बी क्लियर, व्हाई, है ना। कई लोग ऊपर से भी जाते हैं ना स्टॉर्म के, तुम साइड से जा रहे हो, वेदर डेविएशन एंड फ्लाइट लेवल, लास्ट में तुम्हें एंड करना था रिक्वेस्ट वेदर डेविएशन। जस्ट बिकॉज ये स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोसीजर नहीं है, मतलब क्या स्टैंडर्ड बस ये नहीं यूज करोगे, ऐसा नहीं होता। दिस इज अ डेविएशन फॉर वेदर, इट्स नॉट अ रीराउटिंग क्लियरेंस। रीराउटिंग गलत बोला है तुमने, तुम उसी रूट पे हो और उसी रूट पे जा रहे हो जो स्केड्यूल था, इसको रीराउटिंग नहीं बोलते। रीराउटिंग उसको बोलते हैं जब रूट चेंज कर रहे हो तुम। समझ रहे हो। सो ये टेक्निकल एरर्स है जहां हमें लगता है हमने सब सही किया है, बट एग्जामिनर को तो पता होता है क्या क्या टेक्निकल एरर्स है। कई बार हमें लगता है हम अच्छा करके आए हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हो सकता है 50 से ज्यादा परसेंट हमने टेक्निकल एरर्स किए हों, ऐसा होता है। सो रीराउटिंग नहीं होता है, रिक्वेस्ट वेदर डेविएशन। तो ये आपका कॉल ऐसे हो जाएगा,
Request weather deviation, would like to fly to Papa 628 direct, will join Papa 628 at about 30 nautical miles outbound Larrick, estimating Papa 628 1455. Request weather deviation. समझे? तो देखा जाए तो तुम्हारे कॉल में वो चीज है जो मैं चाहता हूँ मेरे कॉल में, जस्ट दैट देख लो आप कितने एरर्स हैं उसमें और जो एरर नहीं होने चाहिए। समझ आ रहा है आपको कुछ? वो हाँ सर। रीराउटिंग नहीं है, वेदर डेविएशन है। वुड लाइक टू फ्लाई डायरेक्ट टू दैट, एंड मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ तक पहुंचूंगा। तुम बोल सकते हो वुड लाइक टू फ्लाई डायरेक्ट टू वटीला, एस्टिमेटिंग वटीला चल जाएगा मुझे एक बार। बट पापा 628 पे प्रेफरेंस डालो ताकि मैं रूट चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं वही रूट फॉलो करने वाला हूँ। रीराउटिंग नहीं है ये, वेदर डेविएशन नहीं है। तो लॉजिक समझ आ गया है, वो लॉजिक में राइट चीजों को यूज करो, तुम्हें सिर्फ राइट वर्ड्स यूज करने हैं यहाँ पे। आई नो तुम सोच सही रहे हो, तुम्हारी सोच सही है, बट ये रीराउटिंग नहीं है, तुमने रीराउटिंग बोला है। आगे बात समझ में? या थिंकिंग इज हाँ राइट, यूज द करेक्ट वर्ड्स। कुछ नया कर रहे हैं ना, तो वो नई चीज में तुम ध्यान से आंसर्स दो, बस। ध्यान से नहीं देंगे तो हमारे कोई वर्ड्स यहाँ वहां चले जाएंगे, मीनिंग सेम रहेगा तो माइंड डिसाइफर नहीं कर पाएगा। बट एग्जाम में तो ट्रेंड है ना, साल के 12 महीने वो लोग सिर्फ एग्जाम से लेते रहते हैं, 6 महीने एग्जाम, 6 महीने एग्जाम की तैयारी, ऐसा है ना। हर महीना एक महीना तैयारी, एक महीना एग्जाम, एक महीना तैयारी, एक महीना एग्जाम, उसमें उनको ट्रैवल कितना करना पड़ता है। हम्म। देख के तो लग रहा था परफेक्ट है कॉल, देखो कितने एरर्स मिल गए। ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स, समझ रहे हो आप? इसलिए सोच समझ के हमें करना। बट बिकॉज यू डिड गुड, यू गेट अ गुड स्कोर ऑन दिस। बिकॉज टेक्निकल एरर्स, लैंग्वेज एरर जरा भी नहीं थे, है ना। अच्छा था, अच्छे से हैंडल किया तुम, और भी बिगाड़ सकते थे। हाँ मनन, क्या सोच रहे हो मनन? मनन के एक्सप्रेशंस नहीं समझ पाता वहां, मैं तो किसी के नहीं समझ पाता। क्वेश्चन नंबर 4, पैन पैन बोला आपने। स्लो केबिन डिकम्प्रेशन, थोड़ा मेरे को लगा स्ट्रक्चरिंग कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था तुम्हें, बट इट्स फाइन, आई एम नॉट गोना जज यू ऑन दैट। रेडियल इज मिसिंग, अ बिग मिस्टेक। जहाँ डीएम ही बोल जाओ वहां रेडियल बोल दो, बस। रेडियल के बिना नहा नहीं जी सकते हम, इट्स आर ओनली डायरेक्शन रेफरेंस कीपिंग अस ऑन द एयरवे। समझ रहे हो तुम? ठीक है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा लगा तुमने मेंशन कर दिया हॉस्पिटल फ्लाइट, कुछ तो किया उसका, अच्छा था। इस पे भी मैं आपको थोड़ा खींच के देख सकता था, इफ यू आर गोइंग टू डू इंटर पायलट विद द रेसिप्रोकल ट्रैफिक एंड सी देयर डीएमई योर डीएमई, उनका डीएमई बढ़ना चाहिए, तुम्हारा कम होना चाहिए। जब दोनों का एक कॉमन डीएमई पास हो जाएगा, मतलब यू आर क्लियर, एंड देन यू कैन डिसेंड एंड रिपोर्ट यू आर डिसेंडिंग एंड रिपोर्ट रीचिंग। ये भी एग्जामिनर करा सकता है तुमसे आगे, बट बिकॉज योर कॉल्स वे सो गुड जरूरत नहीं लगी। और तुम्हारे कॉल्स में दिक्कत दिक्कत होती तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 3 के आगे पहुंचते हुए नहीं, ऐसा भी होता। सो ओवरऑल गुड, अ वेरी गुड रीड बैक। मैंने हिंट भी दिया भाई साहब, मेंटेन रेडियल। हिंट दे रहा है एग्जामिनर, भाई रेडियल मिस हो गया, रेडियल तो बोलो। भाई साहब ने बोला मेंटेन रेडियल, क्या रेडियल, लेकिन वही तो गेम था पूरा यहाँ पे, ऐसे बोलते हैं ना वही तो गेम था। बट या, गुड रीड बैक, अच्छा था। यू मैनेज टू फिनिश क्वेश्चन नंबर 4 विद इन 20 मिनट्स। शुरू में कितना लैग हो रहा था, लेकिन तुमने वरी नहीं किया और देखो तुम्हें रिजल्ट्स अपने आप मिल गए टाइम पे। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा लगा मुझे। वो पेपर आसान था नहीं, वो आसान दिख रहा था, लेंदी था पेपर बहुत। क्वेश्चन नंबर 1 को कितना टाइम लगा? विल को या विल रिपोर्ट रीचिंग चल जाएगा। सो ओवरऑल गुड, दिस वाज गुड। इजीली यू गेट 18 आउट ऑफ 20, एक्सीलेंट। कम से कम 16 मिलेगा इस पे, उससे कम नहीं मिलेगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्या आंसर है, करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का? कॉल। करेक्ट आंसर क्या है स्कॉक कोड का? अच्छा। 7700।
कॉक 7700। मनन लेट्स इज सेट एन राइट, ऑस्कर माइक। मनन इज राइट, यस ऐसे करो, ऐसे और नो ऐसे करो। सही है। ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। मोर्स कोड एसओएस तुमने ट्रू बोल दिया, कितने डॉट्स है फर्स्ट एस के लिए? 3 है या 4 है? ओह। अजम्पशन हो गया ना यहाँ पे। हम्म। तो वहां तुम्हारा ट्रू नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। समझ रहे हो? एस ओ एस, अगर एस मेरा 3 डॉट है तो वहां पे 4 क्यों लिखा है? तुम्हें लगा प्रिंटिंग एरर है, या नहीं, तुमने मैंने वो ध्यान ही नहीं नोटिस ही दिया? नहीं किया। नोटिस ही नहीं किया अभी मोर्स कोड में, और होता क्या है ओ। हाँ, डॉट्स और डैश ही तो होती है, वही नहीं नोटिस करोगे? ऐसे कैसे चलेगा? द लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स caused your presence is called ionosphere. True. नॉट ट्रू बेयरिंग फॉल्स, करेक्ट है, मैग्नेटिक बेयरिंग होती है। अच्छा लगा मुझे वो। फिल इन द ब्लैंक मुझे नहीं पता करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। आर यू श्योर करेक्ट है? अफर्म। आर यू श्योर? अफर्म। कोई इंसान 2 बार पूछता है ना तो उसको सीधा प्रूफ से जवाब देने का तीसरी बार। समझ रहे हो? मैं भी वही कर रहा हूँ, ड्राइव पे हूँ Firm. मैं। An instrument approach has initial segment, intermediate segment, and final segment. वो प्रूफ इसलिए होता है ताकि तुम भी वेरीफाई कर लो, यार मैं ऐसे तो 3 बार हाँ नहीं बोल दिया, ना तो हो सकता है आंसर, एंड अगर हाँ है तो उसको Hmm. दिखा दो, वो भी चुप हो जाएगा पूछने के लिए। 2 टाइप से Hmm. वेरिफिकेशन हो जाता है इस चीज का। हम्म। सम क्वेश्चन नंबर 5 एग्जांपल्स। एक्चुअली तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 5 का बुकलेट है ना, उसमें तुमने 4 डॉट्स का आंसर वहां पे भी ट्रू लिखा है, शायद इसलिए तुमने ट्रू लिखा है। करेक्ट कर लो उस नोट को। ये जो मैंने नोट्स दिए उसी में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है? बट तुम आगे खुल ही रखो। एसओएस, मैंने 3 4 नोट्स कुछ दिए हैं आप लोगों को, वहां से याद रखो उसको, क्लास में हमने पढ़ा है ना? Affirm, sir. इंटर इनिशियल इंटरमीडिएट फाइनल, ये एक चीज होती है जहाँ गलती तुम्हारी ना होके भी हो जाती है। अच्छा, आपने जो दिया वो पढ़ लिया मैंने, अब मैं क्या करूँ, आपका प्रिंटिंग मिस्टेक था तो वो लोग बोलेंगे हाँ तो तेरा दिमाग नहीं यूज कर सकता था तू। हाँ, मैं कुछ गलत लिख के दे दूंगा तो वो गलत कर लेगा, ऐसे करते हैं लोग, समझ रहे हो ना तुम? लोग ऐसे करते हैं, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। इट्स नॉट योर फॉल्ट बट यू विल बी पुट अंडर फॉल्ट, सामने वाला मिस्टेक मानेगा ही नहीं। अगर तू कर सकता था ना, देखो तूने मेरे को बताया क्यों नहीं, तूने रिसर्च क्यों नहीं किया, तूने ब्लाइंडली क्यों पढ़ लिया? फिर स्टूडेंट भी सोचेगा यार मैंने ऐसे कितनी गलत चीजें पढ़ी होंगी, तब उसका जागेगा, अच्छा मुझे चेक कर लेना चाहिए मैं क्या पढ़ रहा हूँ। एनीवे दैट वाज गुड। आई विल गिव यू बेनिफिट ऑफ डाउट हियर, ओके? बट प्लीज मेक श्योर दैट चीजें करेक्ट है, आपने अपने हिसाब से सही किया है, सो नो प्रॉब्लम। So your feedback is done. Let's calculate your total. Until then, tell me, how do you feel after the feedback? बहुत मैंने सभी जगह रेडियल मिस किया है। वो क्वेश्चन के स्टार्टिंग पे उन्होंने लिखा भी होता है कि मेंशन रेडियल डीएमई, बट आई डोंट नो हाउ आई फॉरगॉट। I don't know how I forgot से आगे बढ़ो and tell me how will you fix it. आई डेफिनेटली मेंशन इट इन एवरी कॉल। ठीक है। So you get, you see, you have an average of 80% on each call. सब पे आपको 80% आ रहा है, इट्स एक्सीलेंट। इसमें आपका थोड़ा कम हुआ, 70 हुआ। इसमें आपने 90 कर लिया परसेंट।
एंड लास्ट वाले में आप ले आए 100, 100 नहीं भी लाते तो आपका 80% तो होता है अगर एक क्वेश्चन गलत होता तो. सो ओवरऑल यू हैव स्कोर्ड 84 on 100 and it's your first mock. Excellent. कीप इट अप ओम. जो कर रहे हो वही करो. एंड जो छोटी मोटी चीजें पड़ी है फीडबैक में वो सही कर लो. 84 क्या 100 आ जाएंगे तुम्हें तो. रेडियल बोलने में क्या ही जा रहा है. हाँ, कम से कम 4 मार्क वो हो जाते, 88 हो जाता तुम्हारा. वो पैन पैन वाली मिस्टेक नहीं करते, 89 हो जाता तुम्हारा. सिंपल. उसके अलावा क्या ही मिस्टेक करिए. वेदर डेविएशन रिक्वेस्ट, वेदर डेविएशन नहीं बोला. ठीक है, 4 मार्क वहां आ जाते. देख रहे हो, छोटी छोटी मिस्टेक्स भी निकाल दो आप 100 ला सकते हो. लोग यहाँ पास होने के लिए तरस रहे हैं. सो आई एम ओके विद व्हाट यू हैव डन. अ गुड जॉब. Make sure you don't miss other information. And when it comes to briefing, things that I didn't share was the briefing mentioned in your question paper about how to give the exam. जो अभी ओम ने कहा है, आंसर ऑल क्वेश्चंस इज असेंडिंग ऑर्डर. वो तो हमने किया ही है. डोंट स्किप, डोंट जंप टू एनी अदर क्वेश्चन. एक साथ आंसर देना है. यूजेज ऑफ रेडियल एंड डीएमई डिस्टेंस इज recommended. डेटा कैन बी हाइपोथेटिकल. हमने जिस हिसाब से प्रैक्टिस की है हमारा डेटा रियलिस्टिक है. वो और अच्छा लगेगा एग्जामिनर को. फॉर मैसेज दैट रिक्वायर ट्रांसमिट स्पेसिफिक टाइम, कैंडिडेट शुड मेंशन दैट. ये चीज मैं चाहता हूँ आप सीख लो. आपके कॉल में जो भी टाइम नाउ है ना, क्वेश्चन नंबर के पास वो टाइम नाउ लिख लो. तो सपोज ये कॉल आप मुझे दे रहे हो, देखो इस कॉल में जरा भी टाइम मेंशन नहीं है. तो सपोज यू थिंक आप लैरिक पहुंचने वाले हो, लैरिक के पहुंचते पहुंचते शायद एस्टिमेट्स के हिसाब से आपका टाइम 1415 हो रहा है. तो यहाँ बस लिख दो 1415 एंड फिर वो कॉल लो. ताकि आप जो भी एस्टिमेट्स दो एग्जामिनर वो कॉल के हिसाब से ले सकता है. या तो टाइम नाउ मेंशन कर लो या क्वेश्चन नंबर के पास टाइम लिख दो एंड वो तो ये प्रेजेंट टाइम हो जाती है तुम्हारी. दिस इज द मीनिंग. अच्छा, आपको वो नहीं दिखा ना क्वेश्चन नंबर, राइट? मैं दिखाता हूँ. कंटिन्यू आंसरिंग. अगर गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बोल रहे, कंटिन्यू योर फ्लाइट. जहां जा रही है सीधे सीधे बढ़ते रहो आप. एंड यूज एविएशन आरटी फ्रेजेस लैंग्वेज वॉट एवर वी हैव लर्नड इज मैंडेटरी. सो दिस इज एम्बेडेड इन योर ट्रेनिंग ओनली. टाइम हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उसका आप ध्यान दोगे. सो टेल मी, हाउ डू यू फील? टेल मी. Uh, it was good experience, sir. Nothing to say. I think I'll clear this time, part one and part two as well. पार्ट 2 की तो हमारी बात हो ही गई. उस पर काम करो. Con- पार्ट 1 ये फीडबैक पे ध्यान दिया, मुझे लगता नहीं कोई रिवीजन की भी जरूरत है तुम्हें. समझ रहे हो, फीडबैक समझ गए तुम. पार्ट 2 का जो है वो काम खत्म करो. जो चीज़ें हम करेक्टली नहीं आंसर कर पा रहे तो वो पढ़ लो, फ्री हो जाओ. बाकी बुक्स ना खोलो, सीधा एग्जाम में जाके एग्जाम दो तो भी चल जाएगा. मैं तो चाहता हूँ कि एग्जाम के एक दिन पहले वाला टाइम तुम लोग बुक्स को हाथ ही ना लगाओ और जस्ट मेंटली रिफ्रेश हो जाओ. है ना? तो इफ यू कैन पुल दैट ऑफ ग्रेट. इफ नॉट, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू. देखो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 4 के पास टाइम लिख सकते हो. बाद में आप अपना कॉल दे सकते हो. मैं प्रॉपर इन अच्छे से लाइन लाइन में. मनन, ऑल ओके? अपना फीडबैक ऑब्जर्वेशन रिक्वायरमेंट कुछ भी रहेगा मुझे मैसेज करो. मनन, तुम्हारा पार्ट 2 कॉल मॉक आज कर लेंगे 15 मिनट में. कोई तुम्हारे टाइम रेस्ट्रिक्शन है तो मुझे बताना. नहीं है तो मेरे हिसाब से कभी भी आई गेट इन टच विथ यू एंड चेक विथ यू एंड विल डू इट. ठीक है, डोंट स्ट्रेस अबाउट इट. आज के हिसाब से तुम्हें पार्ट 1 में क्या रिवाइज करना है रिवीजन करोगे और मुझे अपडेट दोगे जल्द से जल्द. ठीक है मनन? है ना? फिर तुम्हारा वही काम है, टच में रहो, पूछते रहो जैसे कल परसों से पूछ रहे हो. दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाट योर जॉब इज. है ना? दैट इज वेरी गुड. ओम, एनी फाइनल क्वेश्चंस, रिक्वेस्ट्स, कंप्लेंट्स? Negative, sir. ऑल द बेस्ट and I'll see you when I see you. If you need me anytime, message me or call me, okay? I can see this tremendous growth that you have had. Keep it up. Grow करते रहो करते रहो करते रहो. बेस्ट. आरटी भी आ जाएगा इवेंचुअली आप लोगों के पास, सीपीएल भी आ जाएगा, जॉब भी आ जाएगा, सब आ जाएगा. मैं चाहता हूं कि आप लोग रिटायर होके एक एक्स्ट्रा लाइफ जियो. इट मीन्स आई वॉन्ट यू ऑल टू बी सो नॉलेजेबल एंड सो ट्रेन दैट you all avert all incidents and accidents or recover from it ASAP if they happen as a pilot. समझ रहे हो आप लोग? And that all training and everything starts, it's already begun. ऐसा होता.
हैट्स ऑफ, वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इतना अच्छा मॉक देते हैं, सब 40 50 60 पे आते हैं फर्स्ट मॉक. डोंट बी हार्ड हेडेड, बट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. टेक केयर स्टूडेंट्स, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर मनन, एंड टेक केयर ओम. ओके. बाय.